एबे हमें पढ़िबा डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर एक्चुअली कौन ना आमे जेतेबेले कोनोसी एक्सटर्नल डिवाइस जदि आमे कंप्यूटर रे ऐड करूचे तो कंप्यूटर ताको प्रथमे चिन्हि पारे। मनीषर जेतेबेले आमे कोने जो लिवर ट्रांसप्लांट गोटे हुए आ गोटे हुए कोन हमर हार्ट ट्रांसप्लांट हुए तो बेले बेले ट्रांसप्लांट हुए किंतु आम बॉडी ताको सपोर्ट करे नहीं तापर कौन हुए से लोकटे मरि और बेसी दिन बचे तो हम तो ट्रांसप्लांट करिसे सेम जिंस ब्लड टेस्ट भी कले आपको बाहर करके हम नेले किंतु ता भितरे ग्यारंटेड नहीं से लोकटा क्योर हो बुझले कि नहीं। तो डिवाइस ड्राइवर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम that operate or control the particular type of device that is attached to a computer। हमें कंप्यूटर रे जो डिवाइस टा अटैच करिबा तो से कंप्यूटर टा से वर्क टा परफॉर्म करूची कि नहीं बा से डिवाइस टा को रिकॉग्नाइज करूची कि नहीं सेटा हमें जानिबा डिवाइस ड्राइवर थ्रू। फंक्शन इज व्हाट डिवाइस ड्राइवर enable a computer operating system and application to access the hardware of connected device। कैमरा में लगेले आमे गोटे एक्सटर्नल प्रिंटर लगेवा तो प्रिंटर आने के लगे देले हमें प्रिंटिंग करि परिबा। तो प्रिंटर इज ए अनदर हार्डवेयर हमर सिस्टम होची गोटे हार्डवेयर सिस्टम केवल तुम कैमरा को एक्सेस करि परिबो। आमे जदि गोटे एक्सटर्नल कैमरा को लगेवा ताले सिस्टम ताको एनालिसिस करि परिबो नाही। तो सेति पई सेही हार्डवेयर रो किछि सॉफ्टवेयर अछि से ड्राइवर सॉफ्टवेयर अछि से ड्राइवर सॉफ्टवेयर ताको हमको इंस्टॉलेशन करिबो बुझो जी ने। The function is what device driver enable the computer operating system to access the hardware to connected device। They act as a bridge between different component of the computer। आमे जो जो कंपोनेंट सब ऐड कर आ हमर सिस्टम ताको ता भीतर कोऑर्डिनेशन पे हम यूज करू छे कोन डिवाइस ड्राइवर हम यूज करू। कोन कोन सब डिवाइस ड्राइवर अछि कैमरा ड्राइवर अछि प्रिंटर ड्राइवर अछि ए होचे डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो ड्राइवर हमें बुझे लगे ने। हेडिंग दियो डिवाइस ड्राइवर तो लिखि दे नोट कंप्लीट कर छ हां नहीं अच्छा खाली कंप्लीट कर दो खाली कंप्लीट कर देखो। ओके ओके एटा मैं पठे देबी नेक्स्ट टा पढो ए भाई बसी बेटी तर आईडी बायो दिटा अछि से आज आईडी हां एक्सटर्नल डिवाइस ऑटोमेटिक अपडेट होची सॉफ्टवेयर कोडा किछि ड्राइवर अछि ऑटोमेटिक से डिटेक्ट करी बुझियो छी किछि ड्राइवर अछि हमको इंस्टॉल करे बुझले एठी कम पे देखो एठी ये हला यूएसबी सी भी हला यूएसबी तो कनेक्टेड हेगा बुझियो छी आ जोड़ा रहला कॉमन जिंस जेते कि माउस हो कीबोर्ड हो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना हो। पेन ड्राइव भी तमे इंस्टॉल कर जेते लगेबो नुवा नुवा ते प्रथमे कोन करिवो आगो ड्राइवर टाको से आगो देखैबो तो ऑटोमेटिक कौन हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रे सेटा इंस्टॉलेशन हो तापर तुम पेन ड्राइव शो कर बुझे लगे
Next hochi language processor. A language processor is a special type of software that has potential to translate the program code into the machine code. तो आमे जेतेबेले कोनोसी प्रोग्राम लेखिबा तो प्रोग्राम गुडा का आमे केमते लेखुजे आमे सपोज आमे किछि जिंस डिस्प्ले करिवार अछि तो जावा लैंग्वेज जदि आमे किछि डिस्प्ले करिवार अछि आमे कोन लेखुजे ना एठी लेखुजे सिस्टम डॉट आउट डॉट देखिबा देखा जाउनी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बुझिला कि नै फॉर डिस्प्लेइंग एनीथिंग कौन सी जिंस डिस्प्ले करिया पे हमें लिखले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सपोज एठी मु लिखिली कोन एठी मु जहा पास करिवि लेखारे तो सेटा मते स्क्रीन रे डिस्प्ले करियो मु आउथर लिखि दउची system dot out dot println. So it is responsible for display any text मते किछि टेक्स्ट एटे डिस्प्ले करियो बुझियो छी ने कोटे नॉर्मल जिंस डिस्प्ले करिया को मते 4-5 टा वर्ड लिखियो because of we are giving a command to the computer that you have to display hello but जेतला आउटपुट देखौ छी हम कोन देखौ छी हेलो देखौ କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲୋ କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡେ the computer doesn't understand the language that we are provided already ଯେତେବେଳେ class start ହେଲା ସେବେଠୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିକି ଆସିଛି computer only understand word that is 0 and 1 so as you know that 0 means the 0 means what it is a off state 1 is called as the on state okay means on state or another is off state now what happened when you pass any instruction then automatically computer convert all the instruction into the 0 and 1 format the combination of 0 and 1 format okay तो ए जो ट्रांसलेशन जो करे ए ट्रांसलेशन की करिवो एटा होची लैंग्वेज प्रोसेसर करिवो a language processor is a special type of software that has potential to translate the program code into the machine code languages such as C, Fortran language or any programming language like Java, Python आमे जहाँ भी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करिवा ताहार ताकू किछि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिवा कहले तारा किछि प्री डिफाइंड कोडिंग सब रहउछ से जिंस ट्रांसलेशन है कि हमको शो करू तो लैंग्वेज प्रोसेसर ही हमको এই পার্টটা বা আমরা जो ट्रांसलेशन वर्कटा এটা করি দেখুছে तो को टाइप रो हमरा लैंग्वेज प्रोसेसर अछि अगेन हमें नेक्स्ट देखिबा तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर first is compiler compiler is a special program which is used convert the programming language to machine language machine language is nothing but it is a 0 and 1 format which computer can understand okay तो मशीन लैंग्वेज ता 0 and 1 फॉर्मेट कंप्यूटर केवल 0 और 1 को बुझी परिबो तो आमे जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करिबा ताको 0 और 1 फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिबा पई आमे यूज कले कंपाइलर और इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेटर okay the language processor allow the computer to run and understand the program by reading complete program in one time which is written in high level language
The computer then interpret this code because it is translated to the machine. आगो से मशीन कोड रे से कन्वर्ट करियो. फर्स्ट हमें कौन लिखिले ना सोर्स कोड लिखिले. सोर्स कोड मींस दैट वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज. ए लैंग्वेज कौन है परिबो हाई लेवल लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस जावा. So these are called as the high level language. So this high level language is converted to the machine language. Machine language is 0 and 1 format by using of compiler. बुझिला कि नहीं. तो कंपाइलर द्वारा आमे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज रे कन्वर्ट कर. बुझि पाइलो. So different compiler name like हम जो देखिबा for Java compiler that is Java C. For C it is GPP. These are the compiler name of any programming language. For Java it is Java C. For C it is GPP. Okay. Next is your assembler. What is the work of assembler? Assembler convert the program written in assembly language into machine code. It is also referred to as a assembler language by some users. The source program has assembly language instruction, which is an input of assembler. Assemble translate the source code into a code that is understood by the computer called as the object code. The computer directly आमे जो कहूचे आमे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास करूचे सी आउ सी प्लस प्लस रे से डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करे नै. प्रथमे से कोन करिवो ना ताको ऑब्जेक्ट कोड रे कन्वर्ट करिवो. Who is performing the object code? Assembler is performing the object code. गोटे छोटा एग्जांपल दउचे मते चिकन करी करिवर अछि. तो प्रथमे मु कोन करिवि चिकन आनिबि. ओके ताको धोई की रखिबि. पियाज बाटेबि. रसुण अदा सब बटा लंका गुंड मसला सब एकाठी करिवि गोटे जगह. एकाठी कला पर तापर मु रोसे प्रोसेस स्टार्ट करिवि. ना कि तेल पके की जीबी चिकन आनिया. चिकन पकेला पर जांगी मसला किनिया जीबी. ताले सब धुआं हे. अहि नहीं आइला को पाउस खाउतो ना पाउस दरकार. मतलब बाम्बो बाम्बो चिकन ओके ना स्मोक चिकन हे. प्रथम आम कौन कर से जिनस गुड़ाक एकाठी कर. जिते तुम एग्जाम देवाक जाओ स्कूल तो प्रथम तुमको कहई तो प्री इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू ब्रिंग योर पेन एंड पेंसिल बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स. एग्जाम रे बसिबो सर पेन आन भलो सर पेंसिल आन पुणी गोटे ड्राइंग पे सर स्केल आनी तो अध घंटा ता भीतर आई आनी भीतर पड़े. तो से कौन करती ना आसेम्बल कर. मते ज्योमेट्री रा किछि करिवार अछि तले मते ज्योमेट्री बॉक्स पूरा असेंबल करके नेकी जीवाको व्हिच कंटेन द राउंडर प्रोट्रैक्टर सेट स्क्वायर ए सब जिंस दियो ना कि खाली स्केल धर के जी. बुझी होची. तो सेति पई ज्योमेट्री बॉक्स इज ए बॉक्स व्हिच इज असेंबलिंग ऑल द पार्ट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड. सिमिलर वे assembler is gather the information when you execute the program. आमे जते बेले गोटे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिवा तो प्रोग्राम रे एक्चुअली हुए कोन सेटा भी बुझिया दरकार. सिंपल गोटे प्रोग्राम नबा आमे दीटा नंबर को ऐड करिवा. जेतले मो दीटा नंबर को ऐड करिवि सपोज मते दुईटा मेमोरी लोकेशन दरकार. नंबर 1 एटी स्टोर करिवि. नंबर एरे नंबर 2 रहिला तापर नंबर 3 रहिला.
दुईटा नंबर ऐड करी आउ गोटे कौन करिवो अरे लेट्स चेक एटी नॉर्म 1 रहिला एटी नॉर्म 2 रहिला ए दुईटा नंबर ऐड कला परे एटी मो रिजल्ट पाइ बुझिला कि नहीं तो दुईटा एक नंबर ऐड कला परे आमे एटी रिजल्ट पाइ तो एई जो नंबर स्टोर करिवा को जगह को वैल्यू को आलोकेट करिवा आउ जो मोर रिजल्ट आसिला ताको को जगह माने स्टोर करिवा ए सब डिपेंड करे कहा ऊपर ना असेंबलर सी कौन करिवा फास्ट जेतबे तुमे क्लास आसछ मु तुमको कौन करछि असेंबल करछि एठी आईटी क्लास हो एठी बायो क्लास हो एठी तू बस एठी तुम बस एठी परे सोशियोलॉजी क्लास हो तो आई एम अरेंजिंग all the parts I'm dividing all the parts then I'm gathering in one group तापर तम मान को सब एकाठी करूची assembler is doing that thing जेते बेले कंप्यूटर कोनोसी इनपुट देला ताको को जगह रे हम स्टोर करिवा आ मोर रिजल्ट कोन आसीबो ये सब assembler डिफाइन करी गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन आ इंफॉर्मेशन गैदर कला परे तापर ताको प्रोसेसिंग करी प्रोसेसिंग करके ताको गोटे मिडिल फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिवो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड चिकन हवा परे परे ताको जे चिकन कसा को तापर पानी पके तापर झोल हो तो आमे चिकन टाको कसी की माने चिकन टाको आनी की रोसे करके कसा जाए से नहीं गला दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट तो देखो रिलेट करो जोटा मु कहली assembler convert the program written in assembly language into machine code. It is also referred to as the assembler language by some user. The source code as a assembly language instruction which is an input of assembler. आमे assembler रो input किए रहइबो आमे जो कोडिंग टा लिखुचे the assemble translate the source code into a code that is understandable by the computer. तो assembler जो कोड रे कन्वर्ट करिवो से केवल कंप्यूटर बुझी परिवो आ ताको कहै जिवो ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड बोली कहै नेक्स्ट आसीबो इंटरप्रेटर interpreter is a program that allow a computer to interpret or understand what tasks to perform मु नंबर नहीं आसीली मते कोन करिवार अछि नंबर को ऐड करिवार अछि तो what tasks to perform the program written with the help of using one of the many high level programming languages are directly executed by the interpreter without previously converting them to the object आमे जते बळे कोडिंग लिखिबा नंबर 1 कोडिंग लिखि नंबर 2 रे लिखिले नंबर 3 रे लिखिले नंबर 4 एमदी कोडिंग लिखि लिखि चल ए भली हमें कोडिंग लिखि लिखि चल इंटर जते बळे हमें कोडिंग लिखि लिखि के चलिले तो सब कोडिंग को से कोन करबो ना 1 बाय 1 ट्रांसलेट कर एक नंबर को ट्रांसलेट करा 2 नंबर को 2 नंबर को ट्रांसलेट करा 3 नंबर को 3 नंबर को ट्रांसलेट करा 4 नंबर तो 4 नंबर रे जदी मोर कोनसी प्रॉब्लम हला if it is wrong then
एटी मु सॉल्व कली अगेन मो प्रोसेसिंग नंबर 1 नो स्टार्ट तो इंटरप्रेटर is a program that allows the computer to interpret and understand what task to perform, either addition, subtraction, multiplication. तापर कौन आसीबो? The program written with the help of using many high level language. First of all, interpreter work is step by step, one by one, one by one, one by one checking. Interpreter, it is not limited with the any particular program. What a particular program पे interpreter नहीं. सबो program में interpreter होता. तो जो प्रोग्राम रे हमें इंटरप्रेटर यूज करिवा सी कोन करिवो को वर्क परफॉर्म करिवो सी लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करिवो इट इज हैपेंड बाय स्टेप प्रोसेस when the interpreter is translating the source code it display an error message if there is an error statement and terminate the statement from translating process जदि कोनोसी लाइन ने एरर देखा गला सेठी मोर ट्रांसलेशन प्रोसेस ता कहि जिवो स्टॉप हि it is not going to the ahead तापर मु सॉल्व कला पर पुनी अगेन प्रोसेसिंग स्टार्ट when the interpreter remove the error on the first line then it move on the next line error ता remove कला पर तापर से next line को ओके the difference between compiler and interpreter a compiler is a program that takes the complete program as a single unit total program को as a unit हिसाब रे and convert the entire source code into the executable machine code तो compiler total program को कौन करिवो as a input हिसाब रे नबो तापर कौन करिवो ना प्रोसेसिंग करके at a time output शो करिवो इंटरप्रेटर काम कोन ना it is not taking the program as a whole जे गोटे गोटे लाइन को ट्रांसलेट करिवो ये एकाथर के नबो ट्रांसलेट करी छाड़ दो ये कौन करिवो लाइन बाय लाइन बेसिस से चेकिंग करिवो तो कोटा बेसी बेनिफिट कंपाइलर ना इंटरप्रेटर because of time save for getting an accurate result error free result then you go for the interpreter तो जावा चालाक है कि तीटा रखी तो मते टोटल भी दरकार किंतु लाइन बाय लाइन चेकिंग ही दरकार ओके the compiler is comparatively faster in order to overall execution of the source code however it takes the large amount of time to analyze to compile and complete the programming अर्थ होची देखो तुम माने जेते जन अच्छा मु तुमर आईटी क्लास नउची मु कोन करबी समस्त को एकाठी न नै कि इंडिविजुअली जण जण करिकि ने तो इंडिविजुअली जदि मु जण जण करि नै कि पढेबी जदि 10 स्टूडेंट की 12 स्टूडेंट रहिलो तले मते 12 घंटा लागिवो सेम जिंस को बार बार कहिया ताले मोर कोन टाइम ता लॉस तेणु जेहेतु रिलेटेड टॉपिक अच्छी आम क्लास टा शेयर कले तुम्हें मैंने आसिल क्लास एग्जीक्यूशन है क्लास गोटे घंटे सर भल कथा किंतु तम भितर धर कहार गोटे डाउट रहा बट यू आर हैविंग ए साइन नेचर तो तुम से कहल डाउट टा मन भितर रही पढ़ा जिते बड़े मु पढ़ेली क्वेश्चन पचारि सपोज जड़े भल आंसर दौची मुझे आंसर को हाँ भरिकी आगू पलि आदि मुझे रेक्टिफाई न कली जे आउ 5 जन आंसर दौना ताकू जदि आइडेंटिफाई न करी ताले कौन हम तुमर डाउटा ही रही
किंतु जदि मु सिंगल सिंगल करके पढ़ेबी बेनिफिट कौन हम तमे पाठ करिच कि नहीं बुझीच कि नहीं एट द सेम टाइम तमे धरा पड़ी इट इज 1 to 1 तो इंटरप्रिटर जो गोटे गोटे कर चेक करिवो देन बेनिफिट कौन रहा जहां भी मिस्टेक रहा सब धरा पड़ी किंतु टाइम वाइज एटा अधिक समय नेक्स्ट देखिवा when you want to run a program a translator program is needed each time to convert the source गोटे ट्रांसलेटर दरकार जे कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करिवो इंटरप्रेटर कौन हो when you want to run a program a translator program is not needed each time because interpreter itself a what it is a translator ଆଉ ଏଠି each time से ट्रांसलेटर पाखକୁ ଯିବ कंपाइलर लोड कला पर ट्रांसलेटर पाखକୁ ये कौन मैं तमे आसला क्लास कला परे मु क्लास पढ़ाई देली किंतु जदि कौन से हेल्प दरकार तमे कौन करिवो each टाइम मो पाखକୁ आस किंतु इंटरप्रेटर रे कौन हो each टाइम आसिया दरकार नहीं कारण हम सिंगल सिंगल करके हैंडल बुझिला कि नहीं ना बुझ पाइलन कॉन्सेप्ट बुझिला तो ये अदर्स it store the object code is more beneficial for commercial purpose object code means it is a conversion of your coding और एक कोड लिखि देली से ऑब्जेक्ट कोड रे कन्वर्ट हल आउ थरे जते बेले मते सेम कंपनी रो किछि इंफॉर्मेशन दरकार मते बार बार आ कोडिंग लिखिबा दरकार नाही मो सेम कोड टा को नै कि यूज करबी सब जगह धर एक्सिस बैंक रो जीएसटी गोटे मॉड्यूल मु बने जीएसटी जते इंप्लीमेंटेशन हला एसबीआई रो भी दरकार तो जते मु एक्सिस रो बनेइली जीएसटी रेट तो सब जगह समान रूम रेट भलिया नु जीएसटी रेट तो सब जगह समान हो ता मॉड्यूल जते मु डिफाइन करूची ताले जते एक्सिस बैंक रे से जिंस रहला एसबीआई रे भी शेयर रही आंध्रा बैंक रे भी शेयर रही तो थरे कोड करी कि मु स्टोर करी देली जो जो जगह रे मते दरकार हबो से कोड टा को मु यूज करी सो इट इज ए कमर्शियल पर्पस सो आई हैव टू यूज only one time I pay the what labor and every time I just execute or deliver the same software it doesn't hold the object code and it is more beneficial of learning purpose. Some language of the compiler is C, C++, Java, Fortran, Pascal, and in here, interpreter, Python is used line by line process. Perl, LISP, FPL, Prolog interpreter. Next comes to the linker. Mainly all the program written using some library function. जेतबे हमें प्रोग्राम लिखिबा ताको ट्रांसलेट करिया पई हेले ऑटोमेटिक कौन हुए ता भीतर किछि लाइब्रेरी फंक्शन थे लाइब्रेरी फंक्शन मींस द फंक्शन दैट इज ऑलरेडी रिटन एंड स्टोर इन बाय द जावा कंपाइलर तो जेतेबेले मते दरकार हबो मु से लाइब्रेरी फाइल को जी घरे चाउल अवस्था अछि जेते थरा भात करिवे मासक जाक से चाउल अवस्था रो आनिबे ना कि सब दिन जाकी चाउल किनि तो these library function are pre-compiled एटा pre-compiled हे कि रहछि घरे रोसेई की फ्रिज रे अछि मु 2 दिन खाइ देई and the object code of this library file store in the .lib extension तो जो प्रोग्राम को हमें रन करिवा तार लाइब्रेरी फाइल .lib हो the main working of the linker is to combine the object code of library file with the object code of our program. Linker काम होबो कोन combine the object code of the library file with the object code of our program. First you translate the program, it is converted to the object. माने object code of the program predefined
ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାଇଲ ଅଛି ତାର ଡାଟା ଗୁଡାକ ଆଣିବ ଆଉ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ର ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାଇଲ ଦେଖ ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାକୁ ରନ୍ କରିବା ଅଲରେଡି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ର କିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫଙ୍କସନ ରହୁଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଗୋଟେ ଦଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ପିଲାମାନେ ଲେଖୁ ଆମେ କଣ ଲେଖୁ ନା ଏଠି ହାସ୍ include including what to include stdio.h standard input output.h okay under this stdio what type of function is present so in stdio one function is present printf which is responsible to display data on screen रे जो data देखिया ପାଇଁ ଆମେ printf use करू मते कुआगला जे दीटा नंबर ऐड करके ता भ्यालू टा शो करिया पे तो लोकंको ठारो भ्यालू आनी की मु स्टोर करिवि कहा मदद रे स्टोर करिवि ना मु यूज कली कोन ना स्कैनर so if I write this library file stdio.h then I am capable to display anything or I am capable to accept the input from user okay so here the mainly all program written in library file, the library function are pre-compiled and object code of this library file stored in the .lib. Main working of linker is to combine object code of the library file. ये जो library file अच्छी stdio ताकू convert करिवो and sometime library file with the object code of our program. तो जेतेबेले आम प्रोग्राम को हमें रन करिवा तार गोटे ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गोटे प्री कंपाइल्ड हेकी अछि ऑब्जेक्ट कोड गोटे आमे रन करिवा तार ऑब्जेक्ट कोड बाहरला से दीटा ऑब्जेक्ट कोड को मिसोइले ही आमे हमर आउटपुट टा पाइयो तो ए दीटा को लिंक अप करिया पे हमें यूज करले लिंकर sometimes the situation arises when our program refers to the function defined in other file, then linker plays very important role. It links the object code of this file to our program. Now, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଫାଇଲ ଟା ଷ୍ଟୋର ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ରେ ବିଟି କରେଣ୍ଟଲି କାମ କରୁଛେ ତ ଅନ୍ୟ ଫାଇଲ ରୁ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆମ ଫାଇଲ ସହିତ କନେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଲିଙ୍କର ୟୁଜ କରୁ so therefore we conclude that job of the linker is to link the object code of our program with the object code of library file of other class. The output of the linker is the executable file. Okay, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ତାର ଆଉଟପୁଟ ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ executable file ହେବ. The name of the executable file same as the source file. Source file ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଛି ram.cs ram.java after translation or after execution it is converted to the ram.exe file okay exe or it is called as the executable file unix in unix executable file can be named as dot a dot out okay a dot out this out is called as the linker this out is called as the executable file okay in unix executable file name as dot a dot out for other in DIX operating system or your Windows operating system, the software name is .exe executable file. Unix रे कौन आसीबो out or other programming language रे कौन आसीबो .exe. It is very important.
Next is loader. A loader is a system program that load and prepare executable program for the execution in a computer system. It is a vital component of operating system that bridges the gap between the machine code and executable code. देखो, loader is the system program that load and prepare the executable program for execution. आमे कौन बनेले ना .exe फाइल बनेले आउ गोटे कंप्यूटर लाइब्रेरी फाइल अछि से दीटा को जॉइंट कला किए लिंकर जॉइन कला प्रोग्राम लोडर कौन करिवो इट प्रिपेयर द एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन माने आमे जो ext फाइल ता बनेले ताको शो करिया पई ताको डिस्प्ले करिया पई ताको रन करिया पई आमे यूज करले लोडर. It is the vital component of the operating system that bridges the gap between machine and executable code. So some of the things a loader can do: allocate the memory to a program. आमे जो variable store करिवा जोरा एग्जांपल ने 10 आउ 20 को ऐड करिवा ता पे दीटा मेमोरी से डिफाइन कला रिजल्ट शो करिया पे गोटे मेमोरी डिफाइन कला तो ए जो वैल्यू पई जो मेमोरी स्टोर करिवो किए ना लोडर ही स्टोर करी. लिंक द प्रोग्राम विथ द लाइब्रेरी. आमे जतरा प्रोग्राम लिखिबा हमर लाइब्रेरी रे किछि वैल्यू स्टोर अछि ताको लिंक अप करिया पे हम यूज करले. कॉपी द कंटेंट ऑफ द एक्जीक्यूटेबल फाइल कंटेंट को कॉपी करी रखिबो. कॉपी आउट अदर प्रिपेटरी टैग्स टू प्रिपेयर द एक्जीक्यूटेबल फॉर रनिंग. एप्लीकेशन को रन करिया पे आउ किछि प्री डिफाइंड टैग से परफॉर्म करिवो. देन ट्रांसलेशन सरला परे से कोडी पठेबो ना ऑब्जेक्ट कोड को प्रोग्राम कोड को हम पठेबो गोटे सेकंड आसीदा प्रोग्राम पे and passes control to the loaded program. बुझिला तो आमे प्रथमे कोन कले लिंकर यूज कले कंपाइलर इंटरप्रेटर लिंकर एंड लोडर. लोडर होची आफ्टर प्रोसेस it is loading the output on your system. Okay, so these are thing we discussed today. It is all about your system software. Okay,
So next class onwards, we go for the application software. Application software is actually a software which we are using based upon our requirement. Our requirement हिसाब रे मते सॉफ्टवेयर मु इंस्टॉल करिवि, मते मैसेज करिवार अछि, व्हाट्सएप यूज करिवि, मेल करिवार अछि, मेल यूज करिवि, क्लास रे जॉइन करिवार अछि, जूम मीटिंग रे मु ई करिवे कि गूगल मीट ई करिवि न ताको अनइंस्टॉल भी करिवि. Okay, so these are the application software that we are using based upon our requirement. बुझिला? ता भितर हमें यूटिलिटी पढ़िबा, कंप्रेशन. ओके ओके आरो नेक्स्ट नोट टा मु आज पठे देबी, ताको पूरा कंप्लीट कर नै थिबो. ओके तापर जते मु पढेबी ओटा सब पढे को इजी लागियो. आउ दुईटा क्लासेस रे ई चैप्टर टा सरी जिवो. आ गोटे तुमर थियोरेटिकल चैप्टर अछि, आ परे से थियोरेटिकल चैप्टर सरी गले तुमर सब जाको प्रोग्रामेटिकली सब स्टार्ट हो प्रैक्टिकल.